It was a long journey from Guwahati to Tawang in Arunachal Pradesh, and then I travelled further to Zemithang in the northern border, a small place of great significance, having its impact on the geopolitical landscape of Asia and the world. Zemithang was the tactical headquarters of the Infantry Division of Indian Army during the 1962 war. It is also among the 11 places in Arunachal Pradesh that China attempted to rename this year. I am at Khinzemane in Zemithang, and Zemithang is important for India historically, culturally and strategically. It is the place where the relations India and China fought the war on 20 October 1962. The distance from Tawang to Zemithang is about 85 to 90 km. The roads are well maintained, but when it comes to building and upgrading hospitals and schools, these smaller towns and villages have been left behind. It is only recently that the central government launched its Vibrant Villages program to improve the quality of life and services for the border people at identified villages. Culturally, Zemithang is home to the Nyingmapa Buddhists, the oldest of Tibetan Buddhist sects. The Monpa community in this Trans-Himalayan area live at a distance of about 10 km from the Tibetan border. The people of Zemithang are wholly dedicated to the service of the nation. They were spoken of villages, and the spirit of patriotism, the national spirit, was inherent in their thoughts and views. Also, in case of any attempt of incursion by the Chinese along the Namdangchi River, cutting the Padma Ridge, any such attempt was strongly and vehemently resisted by the locals as well as the Indian army. तो आपके गांव में कैसे आप लोग बॉर्डर डिफेंड कर सकता है सब मिलके? हम लोग तो इससे कि तो गांव में तो बॉर्डर का डिफेंड तो इससे कि जैसे अभी हमारा सीमा है उसमें अभी हमारा फौजी बैठा हुआ फौजी भैया लोग, तो उसके लिए हम लोग तो इससे कि हमारा गाँव वाला आज का डेट में भी हम पूरा उसमें जरूरत पड़ेगा तो बॉर्डर वगैरह भी बेचता है, और कुछ रास्ता उसका पता नहीं चल रहा तो उसका रास्ता दिखाने के लिए भी बेच रहे, वो हम लोग सब रेडी है। जी जी अभी भी कुछ होगा तो हम लोग गाँव वाला फौजी का शादी अभी डिवीजन के लिए हम लोग मदद करेगा रेडी है। जी जी पूरा गाँव वाला खुशी से मदद करेगा, वही हम लोग बात। भारत माता की वंदे वंदे। Zemithang is located on the banks of the Namdangchu River, which originates in Tibet and enters India from the north near Khinzemane before entering Bhutan. Khinzemane is a grazing ground located on the foot of the Thagla and Hatungla ridges, right at the confluence of Namdangchu and Namkachu. In good news, on the occasion of World Tourism Day, Khinzemane has been awarded the Best Tourist Destination for 2023. Monpa sharing recollects he was about 25 years old when he walked from Lumpo in Zemithang towards the Dhola post in Khinzemane, ferrying ration, goli and barud for the Indian Army during the Indochina War. Today, Monpa clearly remembers the events that unfolded in the autumn of 1962 and how locals were forced to flee from Zemithang to safer areas when the conflict escalated. Now 95, Monpa is ready to help the government in whatever way possible. हम लोग इंडिया का साथ इतना मिलब से अच्छा से बैठा था, इनमें हम लोग रसम ने चीन आ गया बोल के सुना है, रसम ने चीन ने अभी बहुत तिब्बत में चीन बहुत आ गया बोल के रसम में बहुत फौजी आया है, अफसर आया, जैसे सुना है हम लोग। फिर बाद में तो सुनते सुनते तिरंग में आ गया बोल के सुना है, तिरंग पूरा बढ़ते आ गया बाद में फिर सोना पहुँचा तो फिर बॉर्डर में आ गया ये लोग। आज तो फिर हम लोग इंडिया का फौजी भी आया, इंडिया ने भी बहुत किया, हाउ जाती लेके लंबू में इतना बहुत गिराया, कुछ सब रेसिंग गिराया, कुली गिराया, कुछ सब तेल कुछ सब गिराया हाउ जाती फोड़ा वाला ने। फिर उधर से पार किया, फिर हम लोग भूजितानी में तो लिए ना रोड नहीं है, खड़ी रोड नहीं है ना, खड़ी रोड नहीं है, पैदल आए। फिर अब बेटिंग भी भोग के आना पड़ता है, थोड़ा लड़ाई हो रहा है बोल के सुना है हम लोग।
फिर इसके बाद में तो लड़ाई थोड़ा ज़्यादा हो गया तो खिंज़ेमानी नहीं हो गया, उधर तरफ आतंकवाद तरफ तंगो तरफ भी हो गया। इसके बाद हम लोग तो फिर मौत में भी नहीं किया, फिर हम लोग तो नीचे भाग गया, फिर लड़ाई ज़्यादा लग गया ऊपर तरफ से। The 14th Dalai Lama had entered India from Tibet in March 1959 through a route near Khinzemane. Here, at a place called Gorongkokpa, exists a holy tree, about 1.5 kilometers from the line of actual control. ThePrint is fortunate to have visited this revered site. The tree is said to be the walking stick of the Dalai Lama, one that he had placed here after entering India. The Assam Rifles had received His Holiness at this point with a guard of honor. In welcoming him, it is believed that India's relationship with China had changed forever. A memorial dedicated to the martyrs of the 1962 war has been constructed at Khinzemane, a highly protected zone where Indian security forces stand guard. होली ट्री का महत्व मैडम इसमें ऐसे है कि 17 मार्च 1959 को जब हमारा हिज होलीनेस दलाई लामा जी जब तिब्बत से जब इंडिया जब इंटर किया था, तब उसमें यहाँ पे इनका एक रेस्ट पॉइंट था। तो ये खिंज़ेमानी में लेके आके वो जस्ट रेस्ट किया, तो जो वॉकिंग स्टिक जब लेके वहाँ से जब वॉकिंग स्टिक जो उसका तिब्बत से जब उनको लेके आया था, तो यहाँ पे उन्होंने गाड़ दिया था। तो वही स्टिक जो फिर यहाँ से फिर वो एक पेड़ बन गया। तो ऐसे भी दलाई लामा हमारा काफ़ी बड़ा धर्म गुरु मानते हैं उसको, तो हमारे लिए तो और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया ये जगह। इसलिए ये हमारा जो बुद्धिस्ट है या खासकर मोंपा हम लोग को लेके आके, तो हम लोग को ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जगह। About 10 kilometers from Khinzemane is the Zemithang village headquarters. The 12th century Gorsam Chotin Stupa at Zemithang attracts thousands of Buddhist devotees from different parts of the country every year. The Dalai Lama had also stayed at Gorsam Chotin for a day after he entered India. 1959 को जब आपका दलाई लामा जी आपका तिब्बत छोड़ के यहाँ आना पड़ा है, तो उस समय में सबसे पहले आपका होल्ड किया है चुदंगो यानी सूरजम पब्लिक, तो सेकंड यहाँ में होल्ड किया है। तो वो पीछे में जो आपका स्तूपा का पीछे में जो है मंदिर है, वो दलाई लामा जी एक वही होल्ड किया था। अच्छा। वैसे मंदिर तो अभी काफ़ी पुराना होके पूरा खत्म हो चुका था, जगह वही है, तो उसी में फिर हमारा वो मंदिर दोबारा बनाया गया। The government primary school near Gorzam, established 1964, was upgraded to secondary level this year. New classrooms are being constructed for classes 9 and 10. The children in remote villages do not stay home for studies beyond primary school, but in school hostels, which could be far from their area. Hello, good morning. How are you today? Sometimes when we share about the Vibrant Village program to the people in the villages, they struggle to understand the benefits of it. And I think 3 things are very important to develop a village into a vibrant village. And I think the 3 things are education, creating livelihood opportunities, and also opening it up for tourism. So if we do not have a secondary school in this region, students have to travel at least 50 kilometers to the nearest secondary school. So having a secondary school in this region is very beneficial for them, so that they can stay near their home and can pursue education at least up to the secondary level. But they still have to move on to another place for 11th and 12th. But when they're near their home, at least till the secondary level, it creates a bond with their families, and it also creates a bond with the place where they are from. The army is also imparting soft skills training to the locals. Zemithang is soon going to have its first bakery run by the enterprising group of 10 Monpa women from the Yehmotsur Gailing self-help group, one of the first self-help groups to be formed in Zemithang this year. The Monpa ladies took pride in describing their traditional attire. जो हमने पहना है मैम, ये हमारा जिमीथांग का ना पंक्चन का ट्रेडिशनल ड्रेस है, और ये जो हमने पहना है इसको रेव बोला जाता है मैम। ये शिप वूल से बनना चाहते हैं, और जो ये हमने हेड पहना है इसका नाम है सिरजा है मैम। ओके, इसका भी ये भी शिप वूल से ही बनता है मैम।
ये है जो पहना हुआ है मैम, ये याक का हेयर का है और इसमें जो लगा हुआ है ये मोर का पंख है। तो ये हाँ हम लोग का ये यहाँ पे पंख जिमिथांग में ही मिलेगा, बाकी में नहीं होगा। तो ये हम लोग का एक यूनिक मतलब वो है ट्रेडिशनल ड्रेस। The locals in Tawang and Zemithang want development, jobs, schools and hospitals. But they also look forward to tourism and want people to come and explore their lands. So I request them कि अगर ना ऐसे रेनी सीजन बोल के भी नहीं, अगर आप समर सीजन में आए, क्योंकि रेनी सीजन में आएगा तो लाइक रास्ता खराब होगा ना। So I request every people if you want to visit then like आप रेनी सीजन में भी आ सकते, और like if you want to see snowfall, I know like many tourists ना, बहुत टूरिस्ट लोग लाइक स्नोफॉल बहुत पसंद लगते हैं। सो मेनी टूरिस्ट लोग स्नोफॉल देखने के लिए तावांग में आते हैं। तो आप लोग लाइक केयरफुली से ना आप लोग विंटर में भी आ सकते हैं। यू कैन एंजॉय दिस हिली एरिया एंड लाइक हम भी तावांग के हैं, सो हम भी पहली बार यहाँ में आ रहे हैं। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। Even as institutions, rituals and structures of governance go through continuous development, time has stood still for people in Zemithang. They stand firm in their commitment to India. And almost every child here wants to join the Indian Army. How many of you want to join the army? All of you? Wonderful. From Zemithang, Karishma Hasnat, ThePrint.